Welcome back to From Scrubs to Startups, where we explore how doctors are building lives and careers beyond the conventional path. Today's guest is actually someone who's truly blending multiple worlds: medicine, content, music, and storytelling all at the same time. So, Wow, when that's quite an introduction, guys. you Sorry that I'm interrupting you, but that's no, quite no, an No, we love introduction. that. Yeah, we love that. that's what you promised, and I think that's probably the best way we can do this episode. Yeah. So even before I introduced her, you've already heard our guest for today, Dr. Shreya Sangri, a doctor by profession, a lifestyle creator on Instagram, a DJ who plays house and techno, and also the host of her own podcast, Proudly Papi. Today, we're not on Proudly Poppy, but we're on From Scrubs to Startups. And we're going to be talking about her journey. A great example of what it looks like to not limit yourself to just one identity. And more importantly, to explore creativity alongside a medical career. So, in this episode, we'll talk about how she balances these different roles, what it takes to build a personal brand as a doctor, and how to navigate unconventional paths without losing direction. Shreya, welcome to From Scrubs to Startups, and we're really excited to have you here. Thank you so much, guys. That was quite an introduction. Today, I'm on the opposite end of this where I'm not the host of a podcast, and while you guys are. And thank you so much. I'm so excited to be here. Thank you. Scrubs to startups, yeah, we're making big leaps. Startups, no more counting sheep. Startups, while others merely weep. From scrubs to startups, gonna make this money heat. Whoa, 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 whoa. So I Now, think as we promised, we're done with the structured part. This was the only part about the podcast that was scripted. And we've been Yeah, I promised know. a lot of unhinged. So let's dive into it. Yes, yes, yes. so I think the first thing that I want to ask you is, you're a DJ. Yes. Okay, nobody in medical school thinks. I mean, okay, let me take it a step back. Everyone thinks that they want to be a DJ at some point, but कोई करता नहीं है. How did you मेरा take मैं that बहुत plunge? फनी चीज बताती हूँ, एक बहुत फनी चीज बताने वाली हूँ. मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं डीजे बनूंगी. सो कभी भी नहीं सोचा था कि डीजे तो मैंने कभी नहीं सोचा था. लाइक आई देयर वाज अ पॉइंट इन माय in my life when I wanted to pursue dancing professionally because I was always like a really good dancer. So that was there, but DJing दूर दूर तक नहीं था. ठीक है, आज भी जब मैं कभी ऐसे बैठती हूँ and I'm just thinking about life and going I'm just thinking कि ये कैसे हुई, क्या चल रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि ये क्या हो रहा है. चल क्या रहा है. Like I'm absolutely in a different world altogether. This is something that I never imagined or manifested also for myself. So I am equally surprised. So my question then is like, how did this all start? I mean, was this one of those dramatic stories where म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था और देन एकदम से एक मोमेंट, एक यूरिका मोमेंट आया और सब कुछ बदल गया, और इट वाज जस्ट लाइक यू वर ऑलवेज इनटू म्यूजिक बट नेवर थॉट you'll ever end up as a DJ? So all of this, okay, so I will have to involve Sahil. He is my husband. I will have to involve him in this story because lives are very intertwined. We're both doctors and now we're both DJs. He's also Oh. a music producer now. It's very to tell you the story without including him would not be doing justice to the story. So I met Sahil when I had broken up, okay, and I was in a phase in my life where I think I was a little depressed, and ये वो वाला साल था जब मैं internship कर रही हूँ. हाँ. ठीक है, and like I was doing my internship and trying to figure out कि अभी हम पढ़ाई करके हटे हैं, ठीक है, अभी just हम पढ़ाई करके हटे. So just to और, interrupt you, आपने internship तक भी ये नहीं सोचा था कि आपको DJ बनना है. No, not at all. Okay. So I completed my MBBS in the year 2017. ठीक है, 2017 में I started my internship, and I was very happy that अभी हम internship start कर रहे हैं. I was very happy to say bye bye to my college. My college life was great, amazing, loved it. सब सही था, but एक point के बाद हर बंदे को होता है भाई मुझे अब घर जाने दो. तो मैं घर पहुंच चुकी थी. आपका कॉलेज कहाँ पे था? Internship start. My college was in Dehradun. Okay. Okay, so yeah, like I had a lot of fun in college, but yeah, college सब कुछ सही था. But when I got back home, I realized that कोई सांस नहीं ले रहा है. 2 मिनट के लिए कोई अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है कि उन्होंने अभी एक
मतलब वो डॉक्टर बन के हटे हैं, थोड़ा सा सांस ले लेते हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लेते हैं कि हम डॉक्टर बन गए, नहीं, सब एक अलग तैयारी में शुरू हो गए, एंड कि अब तो हम पीजी निकालिए, पीजी निकालिए, एंड आई वाज लाइक दैट्स अमेजिंग, बट लाइक डू वी हैव टू, मतलब हमें अभी करना है, अभी तो हमें करके, अभी तो हम कॉलेज से निकल के आए थे। तो अगेन दिस इज माई टेक, I just did not like the rat race everybody was diving right into. ठीक है, मुझे Love वो that. I was hating every minute of it. मतलब मैं अभी तो करके आई हूँ, अभी मुझे इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप में हमें पैसे भी नहीं मिल रहे थे, एंड मेरे सिर्फ दोस्त ना डॉक्टर्स ही थे, आई फ्रेंड्स इन ऑल अदर फील्ड्स, एंड आई रियलाइज्ड कि मैं जो इतनी देर पढ़ाई कर आई हूँ और मुझे तो स्टाइपेंड भी नहीं मिल रही है, 0 रुपीज मिल रहे हैं, और मैं इतना काम कर रही हूँ, तो जिन्होंने मुझसे कम पढ़ाई कर रहे हैं वो इतना ज्यादा पैसे भी कमा रहे हैं, वो घूमने फिरने भी जा रहे हैं, उन्हें किसी और रेस में फिर से नहीं भागना है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये मुझे बहुत ज्यादा सफोकेटिंग लगने लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू पुट, बट आई ऑल्सो अप्रिशिएट द पीपल हु आर लाइक कि अभी हम इस मोमेंटम में हैं, अभी हम पढ़ाई करके हटे हैं, तो अब हम फिर से एक और पेपर क्लियर कर लेंगे, मे बी दैट्स अनदर टेक, बट but that आपको was not my मतलब तब तक आपको मेडिसिन पसंद था, और what did you not like? मुझे आज भी मेडिसिन पसंद है, मुझे आज भी पसंद है मेडिसिन, ऐसी कोई बात नहीं है, बट देयर आर थिंग्स इन मेडिसिन दैट आई एम श्योर एवरी डॉक्टर और एवरी Right, हेल्थ yes. केयर hates. There are things. So मेरे को ये चीज़ बहुत, पहले तो इंटर्नशिप में पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, ठीक है, क्योंकि मेरे अराउंड एवरीबडी वाज अर्निंग एंड इट वाज टेकिंग अ टोल ऑन मी कि भाई मुझे कोई पैसे ही नहीं दे रहा है, मैं अभी तो इतनी पढ़ाई करके आई हूँ। सेकेंडली आई वाज हेटिंग द फैक्ट दैट अभी करके आए हैं और अभी फिर से भागना शुरू करना पड़ रहा है एक और चीज़ की तरफ, ठीक है। तो उस साल वाइल डूइंग माई इंटर्नशिप, उसी साल नीट एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आई गेव माई एग्जाम, एंड मेरे को वैसे लग नहीं रहा था मेरा क्लियर होगा, बट मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, बढ़िया, क्लियर हो गए, एंड मैं ऐसी थी कि बिना पढ़े अभी क्लियर हो गया, तो अगले, तो एक काम करते हैं, अभी नहीं लेते हैं सीट। माई डैड वॉज वेरी इंटरेस्टेड, ही वाज लाइक कि 2 करोड़ की दरमा की सीट मिल रही है, ये लो पैसे, जाओ लो, एंड आई वाज लाइक, और मेरे को ना ये ROI का कॉन्सेप्ट वगैरह नया नया समझ आना शुरू हुआ था, ठीक है, और मैं ऐसी थी 2 करोड़ की सीट, मतलब ये तो, मतलब मैं पेपर क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, और ये तो उनका फीस स्ट्रक्चर है, मतलब इट wasn't 2 crores but you get No, what no, I'm trying to understood, say, yeah. right? I get what you're saying. मतलब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं क्लियर हो रहा था, वो मुझे पता, ठीक है, हर किसी को पता होता है वो कितना कर सकता है, एंड आई न्यू कि मतलब मैं कितना भी कर लूँ, एक तो मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, ठीक है, एंड आई न्यू अगर मैं कुंडियाँ लगा के सब बंद करके अपने आप को करके भी अगर पढ़ाई करूंगी तो तब भी मुझे नहीं लगता मेरा गवर्नमेंट क्लियर होगा, मेरा हमेशा प्राइवेट ही होगा, ठीक है। तो मेरे को ऐसा था कि एटलीस्ट 2 करोड़ नहीं देने पड़ेंगे, अगले साल 1 करोड़ शायद देना पड़ जाए, कोई ऐसा, मतलब दैट वाज ऑन माय, आई वाज वेरी रियलिस्टिक, माय ड्रीम्स वर ऑलवेज रियलिस्टिक, सो आई थॉट कि लेट्स जस्ट से बाय बाय टू दिस सीट, एंड आई टोल्ड माय डैड कि मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, बट देन उसके अगले साल क्या हुआ, आई वॉज इन रिलेशनशिप लाइक विद माई एक्स फॉर लाइक 6 years, ब्रेकअप हो गया, मेजर डिप्रेशन हो गया, आई वॉज लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग, एंड देन आई chose not to work, but I chose to study only. Okay. Bad decision. So I thought कि मैं बहुत अच्छे नंबर ला पाऊंगी वगैरह, बट मेरे बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं आए, मेरा नीट क्लियर ही नहीं हुआ, या मेरा नीट ही नहीं क्लियर हुआ, बिकॉज एक तो मेरे को खुद को नहीं पता मैं इतने डिप्रेशन में हूँ, एंड आई वाज लाइक ब्रो दिस इज ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई, एंड माय डैड वाज लाइक लास्ट ईयर तो तूने बिना पढ़े क्लियर कर लिया था, ये क्या हो गया, आई वाज लाइक पापा आई डोंट नो, एंड माय पेरेंट्स थॉट कि इसको तो सदमे वदमे लग गए हैं, इसके मतलब ये जो आशिकी में जो थी वो खराब हो चुकी है इसकी पूरी, तो ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, इसकी शादी करा देते हैं, एंड आई वाज लाइक ये चल क्या रहा है, मतलब कोई मुझे सांस क्यों नहीं लेने दे रहा, एंड देन आई रियलाइज दैट आई रियली नीड टू say bye bye to my parents, I need to make a move, I need to move somewhere else, probably start earning, and थोड़े से पैसे जोड़ती हूँ, so I moved to Chandigarh, I got a job that where I was working in the surgery department, but it was chill, 24 hour की shifts होती थी,
Because my grandparents also live there, so my parents would not object so much कि अरे ये देखो फिर से बरी अपने वो बस्ते उठा के फिर चल पड़ी है. So they were like ठीक है कोई नहीं चंडीगढ़ तक जा रही है, it's okay. And also I wanted to show them कि भाई मैं अपने पैसे कमा के चाहे वो 50,000 ही क्यों ना हो, चाहे वो 60,000 ही क्यों ना हो, मैं अपने पैसे कमा सकती हूँ. I can probably do something on my own. But ये शादी वादी वगैरह वगैरह. And at that time somehow I got in touch with Sahil and we started speaking to each other. And he was in a similar phase. He was 1 year junior. He's 1 year junior to me. तो मैं अपनी जॉब कर रही थी और वो इंटर्नशिप में था. We started dating and everything. And while we started talking, we realized कि हमें पसंद है डॉक्टरी, बट हमें लाइफ जीना थोड़ा ज़्यादा पसंद है. And I think while we were speaking to each other, हमने realize करा कि मतलब हमें और भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए. हमें पीजी करने की इतनी जल्दी क्या, लाइक कोई सीट तो नहीं छूटी जा रही है. दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग. यूजुअली सब लोग ऐसे होते हैं कि जितनी जल्दी जब सब कुछ मिल जाए उतना बेटर है. हम ऐसे थे कि एक काम करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि सब में क्या है और क्या ऑप्शंस है. लेट्स जस्ट सो आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट मैं इस बार तो नीट का एग्जाम ही दूँ. तो तभी आप They were चंडीगढ़ में तभी हाउसमैन पोस्ट कर रहे थे. I was there, like I was earning money, I was doing my job. While speaking to Sahil, we thought कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. Like we thought of giving lab. हमने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ें थोड़ा डिस्कवर कर रहे थे. Basically, I'll be honest with you, I just did not want my parents to spend 1.5 crores on me. I was like, इससे अच्छा तो आप मेरे बैंक में बेटर ROI, सिंपल मैथ्स है ना, आप मेरे को दे दो ऐसे, मैं कुछ बढ़िया ही कर दूंगी. ठीक है, तो ये वाला फंडा. तो क्योंकि जब आप छोटे होते हो, जब आप द डिसीजंस दैट यू मेक फॉर योरसेल्फ एट द एज ऑफ 15-16, तब आप इतना फाइनेंसेस की देन यूर लाइक कि ठीक है यार हम कॉलेज पहुंचते हैं, अपनी शुरू करते हैं ये सब. यू डोंट थिंक अबाउट मनी दैट मच. बट व्हेन यू ग्रो अप ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू यू. यूर लाइक ब्रो, पैसे, ROI, ये सारी चीज़ें भी एक होती हैं. एंड पैसे ही एंड सिर्फ डिग्री से सब कुछ नहीं होता. यू ऑल्सो वांट कि तुम थोड़ा सा ओवरऑल तुम्हारी ग्रोथ हो. It was very important to also make friends who are not doctors, so that you actually understand. So that you actually understand कि मतलब लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं और लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, और हम सिर्फ एक उसी में ही कि अब ये हो गया, PG हो गया. Anyway, so First reaction, में बिल्कुल ही अपने like as I'm listening to this is just, first of all, I'm so sorry you had to go through everything that you did initially. I don't think anybody should go through like a whole depressed phase. whatever I went through, I Yeah. think a lot of people go through it because when they move to their hometown Right. for their internship, I feel like a lot of people feel a little bit of a disconnect from their friends, from the person who they were dating for so long, because they're in that environment for like 5 years. So I feel they all feel that disconnect, and they're forced to talk to people who are not doctors. And they realize कि भाई जिंदगी में बहुत और कुछ चल रहा है apart from doctor. And I think what also stood out is कि we, Meg and I, we speak to people. A lot of people say this कि medicine पसंद है, लेकिन it's just like आजू बाजू का जो culture है, that is the problem. कि rat race में भागो, UG के बाद PG में जाओ, फिर fellowship करो, सिर्फ आपकी पूरी ज़िंदगी मेडिसिन बन जाती है. बाहर का क्या. अभी आज ही मैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट से बात कर रहा था एंड मैंने पूछा कि अरे वो ईरान वॉर के बारे में, US ईरान का तो काफ़ी सीन हो गया. तो उसने बोला अरे नहीं, नहीं होगा. एंड नहीं, तो जस्ट लिसन, इट्स लाइक सो फनी. सो दैट पर्सन लुक्ड एट मी लाइक तू कितना स्टूपिड है ब्रो, वो ईरान नहीं है, इराक है, और उसको भी वो तो कब से चल रहा है. आई वाज लाइक no, I don't think so But Exactly, that's what I'm saying. They're so unaware. and that is so true. Everyone is such in such a bubble. वो उसके बाद कुछ देखते ही नहीं है. Exactly, like that's what I'm saying. जैसे मेरा breakup हुआ and I felt कि oh shit ये क्या हो गया, and I felt so many emotions. I'm sure I feel that lot of people go through that. yeah. A little disconnect with their Correct, immediate peers and everything. I think everybody goes through something that. else a lot of Also- people go through is, it's just funny how for most Indian parents the solution to any problem is shadi.
especially if you're a girl, okay, and they thought, उन्हें लगा कि इसका ब्रेकअप हो गया. एंड यार एक सेकंड, हमारे पेरेंट्स ने जिसको डेट करा है उसको शादी करी है, आधों ने डेट भी नहीं करा है, तो उनके लिए इस लड़की ने 5 साल किसी को डेट करा है और ये अब उससे शादी नहीं करेगी. आई थिंक हमारी बेटी का दिमाग ऑफिशियली खराब हो चुका है, हमें इसकी शादी करा देनी चाहिए. Like I that's love the my thing parents, to but yes. I love my parents, but that was their immediate solution. So that's when I thought कि भाई bro, मैं तो I started applying for jobs and I was like चंडीगढ़ जा रही हूँ मैं. चंडीगढ़ is also a very सस्ती जगह. Like it's Okay. like for somebody जिसकी salary ही 40-50 हज़ार होने वाली है at that time. तो मेरी फर्स्ट जॉब होने वाली थी, मुझे पता था इससे ज़्यादा मुझे मिलेंगे नहीं, तो आई ऑल्सो हैड टू थिंक अबाउट सेविंग एंड एवरीथिंग. सो आई थॉट चंडीगढ़ इज अ गुड ऑप्शन. प्लस दे विल ऑल्सो नॉट डू ज़्यादा चक्कर बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स आर देयर. So I Anyway. just want to share this one thing that literally happened 25 minutes ago. Okay, so I was rushing back. I came back from the hospital. So I don't live on campus. I have rented a flat, and the owners of the flat live on the ground floor. So what happened was, कल मेरे Amay, you should solve this. They should listen to the podcast. Yeah man, maybe. Yeah. You know what? I should be like, अंकल जी कल मैं आपके बारे में बात कर रहा था पॉडकास्ट पे. Please let me live. So yeah, but I mean, I think I'll send it to them when I'm moving out. But I'll tell them about it. So what happened is कल मेरे से लाइट मैं चालू करके चला गया. And today जो आंटी थी, she was speaking to somebody else, and as soon as I walked in, I just overheard her. She was saying that ये है ना कल लाइट चालू करके चला गया. The other person asked, शादी हुई है क्या इसकी? I was like, मतलब, and the auntie said, नहीं ना, देखो ना ऐसे ही होता है. I was like, हाँ, मतलब मेरी लाइट चालू रखने की वजह ये है कि मेरी शादी नहीं हुई. Like that's the solution for everything. You'd know better. I don't think आप ऐसा कुछ कह रहे हो बेचारे. मतलब इट्स ओके, आई गेस वो थोड़ा सुन ही ले तो बेटर है. Yeah, I hope so. But yeah, sorry, I just had to say this. कमिंग बैक टू हमारा क्वेश्चन क्या था. मैं काफी तो आप लैब के लिए रह गई प्रेप हूँ. कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, आप तो हाँ, डीजे कैसे? यार हाँ, सो हुआ क्या, कोविड आया. ठीक है, कोविड हैपेंड. नाउ आई एम इन कोविड आया एंड व्हेन आई वाज वर्किंग इन चंडीगढ़ माय पेरेंट्स वर लाइक कोविड आ गया है, आप प्लीज घर आ जाओ, यहाँ आके काम कर लेना. एंड बाय दैट टाइम साहिल हैड आल्सो कंप्लीटेड हिज इंटर्नशिप. तो कोविड आया, वी स्टार्टेड वर्किंग इन गुड़गांव. जैसे कोविड खत्म हुआ, साहिल एंड आई बुक्ड आवर फर्स्ट टिकट टू गोवा. वी वर लाइक लेट्स जस्ट गो टू गोवा. हम गोवा गए. ठीक है, हमारा एक फ्रेंड है जिसने हमें बोला कि एक नया म्यूजिक चल रहा है आजकल, टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक. एंड ही वाज लाइक, श्रेया, सिंस यू नेवर pay attention to the lyrics, maybe you will like it. And I was like, क्वेश्चन पूछना है आपको. तब तक Yeah. did you like techno music or were you a Bollywood girl? bro, I was a Coke Studio, Bollywood, Punjabi, pop, all of that. I would listen to anything, Except techno. any random, anything. I would not even call myself a music enthusiast at that point. Really? So yeah, like exactly. So we went and as suggested by our friend, he told us कि पक्का यहाँ जरूर जाना, यहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा है. There is this really nice international DJ who's come, and we were like, okay, let's go there. हम वहाँ गए and like हमने सुना, वहाँ पे माहौल बढ़िया था. It was, what was that place is called Glory, okay. अब वो like it's been shut now, but we went there and we were like, यार सब यहाँ पे काफी hypnotized से घूम रहे हैं. I wonder why. I wonder why. अब क्या थे वो तो मुझे नहीं पता, बट या इट वाज, हम पहुंचे वहाँ पे एंड देन वी वर लाइक ओके, लेट्स वाइब टू दिस म्यूजिक. एंड समहाउ वी रियली लाइक्ड इट. आई स्पेशली, आई लव्ड इट. ओके, एंड आई वाज लाइक, और मैं पता क्या सोच रही थी कि मैंने अपनी इतनी सारी उम्र निकाल दी है बिना ये म्यूजिक सुने, बिना टेक्नो सुने. ठीक है, और टेक्नो तो काफी टाइम से चल रहा था, बस मुझे पता ही 2021 में पता चला इसके बारे में. ठीक है, 2026 चल रहा है, मुझे 2021 में पता चला इसके बारे में. सो आई वाज लाइक ओके, दिस इज नॉट रियली गुड, दिस इज रियली नाइस. एंड साहिल को तो इतने ही मजे आ गए थे, लाइक ही लव्ड टेक्नो सो मच दैट द मोमेंट वी गॉट बैक he was like, bro, I want to become a DJ. And I was like, okay. Okay, I mean, I was like, yeah, it's great. I mean, if you want to add another feather to your cap, why not? Go ahead. He was like, उसने एक सेकंड नहीं लगाया. ठीक है, वो गया. He went to music school. It took him He went to 3-4 music months. school. That's insane. Yeah, like That's really yeah, awesome. like it was for 3-4 months only. अच्छा. ठीक है, वो गया. It was like for 3-4 months, 4-5 महीने में he learned it.
ठीक है, by that time we started attending lot of electronic music parties happening in Gurgaon itself. अब जिसके बारे में हमें पहले कुछ नहीं पता था, अब हमारे नए नए दोस्त बनने लग गए, नए मतलब start networking with different kind of people. So he's people who also like from to go to Gurgaon? electronic music parties. He's also from Gurgaon. Yeah. So we started attending parties. Different people started becoming our friends. And then he landed his first gig. And so he played his first gig and it was nice. He This also is something that I he actually want to ask you. जब भी तभी he Yeah. was learning, वो still थोड़ा experiment कर रहे थे. आपको उनका म्यूजिक पसंद आया था तभी? यार मेरे को बिल्कुल पसंद आया था. Okay. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनफैक्ट. Okay. मैं बहुत ही ज्यादा, बट मैंने तब भी नहीं सोचा कि मैं डीजे बन जाती हूँ. हाँ. Okay. नहीं. That At that is my next point, I'll question. tell you what. At that point, I had started creating content actually. Okay. उस point पे जब साहिल डीजेइंग सीख रहा था, साहिल had made my account public and he told me कि श्रेया बिना ज्यादा सोचे start creating content because he was like you're gonna be good at it. So I was like, let's do it. करते हैं, क्यों नहीं? And content creation started for me. I have a question here. Sorry. How did you start? Like, I mean, you said okay, content create करते हैं, but what was the first step? Like, So I would love to document everything like I was an influencer. And these are some things that my friends used to notice, that Sahil used to notice. And during that COVID time, I, like everybody else, मैंने ऐसे कुकिंग करी जैसे मैं किसी मास्टर शेफ में जाने वाली हूँ. ठीक है, मतलब मैं बहुत ही लेवल की रेसिपीज इन्वेंट कर रही थी. इनफैक्ट दैट आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग. I had invented a recipe for beetroot hummus, which was free of olive oil, and it was so good. It was so good that my friends actually told me, "Ki, why don't you start selling this?" And I actually sold at least 100, 200 jars, and I did that for like 3-4 months. Yeah, bro. Now while I'm talking to you, मुझे ये भी याद आ रहा है. So I've always been, doing a lot of आपने things quite in my literally life. बहुत सारी चीजें explore करी. मैंने बहुत I think सारी the चीजें, मैंने problem told you for ना all कि doctors- भाई thumbs up. But what I'll say is probably the doctors listening. This is inspiring because you can technically monetize everything that you do. You just need to be smart enough Everything. to try and monetize it. You Which just I need to be think smart. Okay, this also takes me to another thing. There was a Yeah. time when you're asking me about content creation, right? So जब वो COVID वाला time चल रहा था ना, मैंने actually में कैसे, since I had gained a lot of weight before, like when I was in Chandigarh and when I came back to Gurgaon, and ये वाला COVID वाला time चल रहा था, so I had gained a lot of, I had become so fat. That's why I had to learn how to cook, so that I curate like healthy but tasty recipes for myself. While doing that, there's a friend of ours जिसने हमें बोला था कि स्पेशली कि गोवा जाना, टेक्नो सुनना. This friend of ours, he was also a lot into fitness. So me, Sahil, and him, his name is Karan, we started like a little page called as 3x Fit, where we started taking clients. I used to give them healthy recipes. Karan used to teach them how to exercise at home. And I don't remember what Sahil was doing, but Sahil was also doing something. And we actually we I legit was had doing workout clients. music. Bro, I don't know, he was doing something, okay? We did that also for about 6-7 months and we made a lot of money through that. Okay, like 3x Fit was also a Wow. hit, okay? But then Sahil got into DJing like way too much and he was like, bhai 3x Fit ko buy. I was like, cool. And मैंने content creation, मैंने start करा था from fitness. कि healthy recipes, fitness करते करते I dabbled into lifestyle, I dabbled into a lot of things, fashion, lot of things. And I'll tell you why people were following me. They were following me कि भाई ये लड़की डॉक्टर है और डॉक्टरी तो ये कर ही रही है, उसके साथ साथ ये इतनी सारी चीजें कर रही है. That was the simple reason. That was the only reason why people were following me, because I would get DMs कि भाई we love that you're doing so much in life. And at that time I was not even doing so much. Like right now I'm doing a lot. At that time I was doing thoda bahut and people were like flabbergasted by that only. So now coming to music. Basically I started DJing 1.5-2 years back. अब ये कैसे होता है? Sahil and I decided that he's going to teach me how to DJ because I wanted to play at our after party. I wanted to surprise all my friends, my parents and everything. And I was like, bro, why not just let's just learn it. मैंने उससे सीख लिया and everybody was shocked and everybody was so excited because I was playing at my own wedding after party. And we put out all that content and everything and people thought
एंड साहिल को डीजेइंग करते 2 साल हो चुके थे, ठीक है, एंड मतलब so we put out that content and everybody in our network thought that this is my soft launch as a DJ. I started getting booking queries. They were all like, okay, I think Shreya has become a DJ. She was DJing at her own Interesting. wedding. Yeah, so let's like, this is a gig coming, and I think Shreya would be perfect for it. And this is how I landed my first gig. Oh, Somehow I started getting gigs. So, and Sahil was like, bro, you're getting gigs, and I think you should just like, just do it. Let's see if you like it or no. So, this all happened just out of like I No, never planned on doing it. There was never a plan. कि हम ये करके देते हैं. The plan always has been to live life fully without any regrets, and to not listen to anybody and to not listen to the world. That's the plan. Okay. love And that. somehow, yeah, and I was like, bro, you know what? I'll just do it. मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था कि because I'm somebody who's like really, I am not very tech savvy. I'm not. So that whole setup was very daunting for me. And but yeah, I was like, you know what? Maybe this is a sign. I should just do it. And then when I did it, it went okay. And then somehow I started putting myself out there and I started getting more queries. Later on, gradually, I started getting good at it. And now I think I'm doing pretty decent. Yeah. that's Really a quite some great journey. Yes. I guess what I really have to ask is if you had to go back and give advice to like yourself from 10 years ago, that was like really struggling through this phase after a breakup, overwhelmed with like the pressure of like इसके बाद NEET करो और PG में चले जाओ. Uh, what was like that one piece of advice that you would give? Because it's the fact is even today I think those pressures exist. Like even for a medical student today, it's not like हाँ अभी तुम MBBS कर लिया अभी जाके Deloitte में काम नौकरी पर लग जाओ. It's always like MBBS क्या है अभी PG करो फिर fellowship का सोचो बाद में बात की देखेंगे travel सब छोड़ दो. So what's your advice today? I would tell myself to learn how to manage finances better. Okay, That's yes. piece of advice I would, because I think I was always a very rebellious girl. I've always Okay. put my this one thing that I live by, that live your life truly, don't lie to yourself. अगर कोई चीज नहीं पसंद आ रही, अगर नहीं आ रही पसंद तो वो छोड़ दो. And somehow when I told you that I had prepared for my NEET exam and I couldn't even clear it, all my friends cleared it. All of them started their post graduation, and I would be lying if I said that did not affect me. It literally broke my heart because I was always very good at academics. I was always a very bright student, even in college. Like I would always Right. score बढ़िया. और ऐसा भी नहीं था कि मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ती रहती थी हर समय, नहीं, ठीक ठाक पढ़ा, बढ़िया नंबर आए. I was always somebody who was always having fun also and always studying also. So it really, Right. really broke me when I couldn't even get that, that passing वाला, जो मैंने last year internship में बिना पढ़े ही निकाल लिया था. No matter how much your parents love you, they sometimes will say things to you that would hurt you a lot. But just know that it is coming from a place of love, that you should not take it very personally. Because I felt very bad when they thought that the PG clear नहीं हुआ है and like a boy broke up with me who was with me for so long, and then they thought that I should get married. So
I felt very belittled in that very moment. कि मतलब इनको लगता है कि मैं कुछ उखाड़ नहीं सकती जिंदगी में. So you know, and also I feel that हमें मतलब इंडिया में फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए वो नहीं सिखाया जाता. तो I Right. always Yeah. feel और this स्पेशली is मेडिकल something स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं आता. मतलब हमें so when I met Sahil ना, he told me one thing कि bro, I don't know about degrees, I don't know about anything, but there is one thing that I know कि bro SIP ये stock ये कैसे करते हैं. तो one thing that he helped me with was how to make how to make money and how to like multiply the money. So because as a woman I feel if you have good finances you can walk out of any situation. Yeah. 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 तो श्रेया, right now you're working as a doctor and you're working as a Yes. DJ. तो मतलब आप दोनों कैसे रहे हो? ओके सो मैंने ना एक्चुअली अभी बहुत रिसेंटली एक रील भी डाली थी इसके बारे में बिकॉज मुझे तो लगता था कि मतलब लोग ऐसे ही पूछते रहते हैं बट एक्चुअली पीपल वांट टू नो दिस. सो आई डिड माय एमबीबीएस एंड आई स्टार्टेड वर्किंग राइट आफ्टर इट. Right. So I work as a junior resident and I mostly see the wards and मेरी ड्यूटीज 24 आवर शिफ्ट्स वाली होती है. मतलब मुझे हफ्ते में 2 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है 24 आवर शिफ्ट करने के लिए. तो दिस इज सो बेसिकली 2 मतलब जैसे मैं ट्यूसडे को चली गई और मैं थर्सडे को चली गई. अब मैं चली गई हूँ वहाँ पे, बाकी दिन मेरे पास खुद के हैं. ऑब्वियसली सोना वोना भी होता है आके, Right. बट दैट्स हाउ आई बीन मैनेजिंग. मतलब मुझे महीने में 8 या 9 बार जाना पड़ता है हॉस्पिटल. एंड समहाउ मेरे हॉस्पिटल में जो मेरे जो एमएस है लाइक द मेडिकल सुपरिटेंडेंट आई हैव, he's an angel because he knows that I am doing this. He's very supportive. He tries to help out. He has given us the roster कि आप लोग अपने हिसाब से roster बना दिया करो and जैसे सबको सही लगे वैसे कर लो. तो this is definitely a blessing. मैंने इस blessing का पूरा As you should, यार, as you should. 100%. तो मेरी and all my colleagues also know कि ये तो weekends पे available नहीं होती है, तो मेरी weekends पे duties नहीं लगती होती हैं. तो यूजुअली ऐसे ट्यूसडे को होती है मेरी ड्यूटी या थर्सडे या फ्राइडे को होती है. क्योंकि मैं अगर संडे को किसी डिफरेंट सिटी में प्ले कर रही होंगी तो मंडे को आऊंगी, मैं रेस्ट करूंगी. तो दैट्स हाउ इट गोज. दिस इज हाउ आई हैव बीन मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर. I think that also brings me to something that's worth having a conversation about is like the culture of the workplace that you pick. So before I went to the US, it's like I always used to think like ये culture वाली बातें, मतलब ठीक है workplace culture, क्या ही बात करना है इस पे. But when I went there, I realized that आप जिस environment में काम कर रहे हो, it affects your ability to grow in so many ways. It's like if you're in an environment जहाँ पे आपके साथ जो काम कर रहे हैं बदतमीजी से बात कर रहे हैं, nobody wants you to grow personally and professionally, तो आपको जो चीज़ें पसंद है वो भी आप करना बंद कर दोगे. But on the other hand, here you have a workplace which you're still doing things, different things that you love, balancing things with people enabling you to do that. So often, people don't really understand the importance of what it means to have a workplace where you'll fit well into the culture. What do you think about that? But I would also like to tell you something. See, I usually like for example if I'm doing a 24-hour shift, मेरे साथ एक और डॉक्टर होता है एंड वो डॉक्टर हमेशा से 3 साल से साहिल रहा है. Awesome. हमारी ड्यूटी इकट्ठी लगती है, ठीक है. तो ये मैं आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट विद यू. सो साहिल एंड आई लाइक हमारी ड्यूटीज हम साथ लगवाते आए हैं, ठीक है. बट ही क्विट, लाइक ही हैज क्विट मेडिसिन. उसने रेजिग्नेशन डाल दिया था. लाइक इट्स बीन अबाउट 6 months. सो पिछले 6 महीने से मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है. दिक्कत क्योंकि लाइक जो करंट बॉस है वो तो बहुत अमेजिंग है, बट द बॉस इज गोइंग टू चेंज. तो ये बॉस तो बहुत अमेजिंग है, तो जो बॉस आने वाली है वो she's going to take away the roster. So all of these things are happening right now. There's a lot of मतलब promotion ये happening. सारी चीजें ऐसी भी है which do come into play because in the bigger picture these 110%. Like a good boss, somebody who's happy in his or her life. If you go and 100%, tell yes, him or that her- one statement is everything. Yeah, for yes, sure. like having a good MS, having a good boss really, really makes your life good.
having colleagues who are not very interested in your life. They're like, हाँ ये बहुत कुछ करती है. I help them, they help me. कभी कभी मुझे ड्यूटीज चेंज करनी पड़ती है. This involves a lot of planning also. बहुत meticulously. For example, I am getting a great gig on a Thursday. यूजुअली थर्सडे को नहीं होता है, बट मेरी ड्यूटी है. मुझे कैसे ड्यूटी चेंज करनी है वो मुझे ही पता है. मेरे लिए दैट्स गोना बी अ टास्क. सो Right. again, when you want to do so much in life, then you have to do so much of planning, and you have to do a lot of these things also. Now, this might sound like privileged behavior. This might sound like I'm coming from a place of privilege, but I think I've reached a certain age where I want to give my health the topmost priority. Like, if I wake up, I have to go to the gym. My diet has to be on point. And I'm so much in front of the camera. Like, now I'm going places, performing in different cities, doing so much does take a toll on your health also. चाहे मैं वो यही बोलूँ कि मुझे हफ्ते में 2 दिन ही जाना है, 24 आवर शिफ्ट ही करनी है, पर वो है मुश्किल. मैं पिछले 2-2.5 साल से ये करती आ रही हूँ. बट अब मुझे ऐसा लग रहा है दैट even with the finances also, like my touch with my finances are great. Yeah, it's been a very difficult having this conversation with myself only, क्योंकि मैंने डॉक्टरी में इतनी मेहनत करी है. But there comes a point in your life where you have to choose some things over the other. So yeah, Correct. I think that Makes point has finally So come in my it life. actually so makes sense, and I think But for we wish you somebody, luck like, for everything that you decide. but like there's so many people out there who want to start their journey, and like you just can't be like कि अच्छा मैं अभी से ये छोड़ देता हूँ या मैं अभी ये वो कर लेती हूँ. I think if somebody has a passion for music or they have passion for something else also, you can manage it. Like for example, like I had put a reel where everybody DM'd me and they're asking me कि कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हो यार, आप हमें बताओ. और मैं I can't say the name of the hospital right now. मैं अभी नहीं बता सकती. बट मैं ये हो रही हूँ कि लोगों को सच में नहीं पता, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल्स तो बहुत सारे हैं. मतलब सिर्फ मेरा हॉस्पिटल थोड़ी है जहाँ पे 24 आवर शिफ्ट होती है. बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं I mean, जहाँ पे I होती है. think it surprised most. Like again, I don't know about you, Meg, but like I just thought like most hospitals में it's like 9 to 4 duty करो और फिर वो on call जैसा system है. So like that's also I think good to know when for people who are actually Even I've considering heard, even in Bombay, there are places which will allow you to do 24-hour shifts and as and when you want to. मतलब वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि you have to I take think shifts. You can just tell them that okay, I want to do a 24-hour, they'll take you on. I have a friend, like my best friend. She's also a doctor and she is an actor also. She's like me only, dabbling into different things. Yeah, Next she's been podcast working in guest. Leelavati. Yeah. So yeah, she has worked in Leelavati. वहाँ पे भी 24 hour shifts होती है. And I'm actually surprised how people don't know about this. Actually, I'll tell you why people Yeah, I mean, don't know about this. really. Because people are so focused on just doing one thing. They made a decision for themselves at the age of 15, and now they are like, okay, let's just stick to that, because that's what we've been And told. sometimes some of them haven't even made that decision for themselves. Yes, and sometimes people have not even, like for example, I consider myself lucky कि चलो ठीक है, मुझे पहले पता था कि मुझे डॉक्टरी पसंद है, अभी भी पसंद है, बट अब मुझे और भी चीज़ें पसंद है. बहुत सारे लोगों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है और उनको यही नहीं पता होता कि उनको और भी चीज़ें पसंद है. So I consider myself fortunate at least. Question 2. बताओ. What are the parts of medicine that you like and what are the parts of being a DJ that you like? It's so beautiful to treat a patient, and when they go and the gratitude they with the gratitude they show, and even if they don't show gratitude, the like for example, Satisfaction that you get. yeah, that satisfaction, that is amazing. For example, अभी जैसे there's just a patient जो अभी crash कर रहा है, और मतलब because I work out, तो मैं उसको CPR इतने लंबे टाइम तक दे पाई, and I actually revived him. तो वो फीलिंग वाज दैट, मुझे आज तक वो फीलिंग किसी और चीज में नहीं आई है. मतलब वो ऐसे लगी हुई थी, एंड उनको ना हम वहाँ ऊपर लेके जा रहे थे, आईसीयू में लेके जा रहे थे, और तब तक मैं ऐसे लगी हुई थी करने के दीज लिटिल थिंग्स. And then I also love the fact how there's so many consultants who appreciate me, because somehow they land on my Instagram and they're like, "Whoa,
ये तो श्रेया है, ये इतना कुछ कर रही है. So I love that also when they truly appreciate DJ. Bro, I love music. I now though I can say I love making people dance, man. It's a therapy in itself because the kind of music I play, okay, I'm not going to be like, I'm not going to be snobbish here, but like an electronic music DJ, we weave a story. There's a storytelling through music. I just don't go there and play bangers and I like, oh, yeah, matlab, Really? I like didn't know this. basically a Bollywood DJ, they play bangers. Right. Their work is different. And electronic music DJ does storytelling through music. Like if you really educate yourself with that kind of music, you'll understand how it is different from other kind of music. Like every music has its own purpose. This is all about taking people on a journey. Correct. Correct. So I think that really has been a fascinating conversation. Yes. Before we close out, if there's somebody who's feeling stuck, and we ask this to pretty much every guest, you know, somebody who's probably like something like a position that you were in, मुझे medicine पसंद है, but और चीजें भी पसंद है, लेकिन पता नहीं अभी क्या करना है, society का इतना pressure है. What's the one step that person should take? Like the absolute first step or the immediate next step that they should take? I really think that you should definitely not think about expectations. Society के expectations के बारे में तो please नहीं सोचना चाहिए यार, ये आपकी जिंदगी है. Please, ये बोलना आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल होता है, but it's very, very, very important to live your life the way you want to. If you are not happy, you're going to be bitter all your life. And happiness comes from all these little steps that you take towards your happiness. Whether it's saying no to posing. You know, there's this one question that you never asked me, that why did I not pursue post graduation later on? There's this one thing that I want to tell. Let's get you to answer that now. Yeah, so basically, while my friends had gone for their post graduation, they told me what was happening with them. How they were harassed, how exhausted they used to be, how little the salary used to be, how much their parents had invested, and how poor the ROI was. So mentally exhausted, physically exhausted, harassed by the seniors. All of this made me take the decision कि भाई मुझे इससे अच्छा तो मैं पीजी ना ही करूँ. ठीक है, अगर मेरे 10 दोस्त थे पोस्ट ग्रेजुएशन में तो 8 के 8 परेशान थे. एंड यू नो व्हेन आई यूज्ड टू मीट देम, भाई वो बिल्कुल खुश नहीं थे जिंदगी. मतलब फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में तो बिल्कुल खुश नहीं थे, सेकंड में फिर थोड़ी सांस आ रही थी, थर्ड तक वो ऐसे हुए थे कि बस खत्म होने वाला है. तो जब खत्म हुई, जब उनकी मतलब जब खत्म भी हुई, जब उन्होंने पैसे कमाने शुरू करे, ओके, दिस इज नॉट, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द रियल आइडिया. जब तक उन्होंने वो पैसे उन्होंने स्टार्ट करे, मतलब जब कमाने शुरू करे, मैं ऑलरेडी इतना सेव मल्टीप्लाई कर चुकी थी. सो एक जो अच्छी चीज़ मैंने ये करी कि मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने जॉब करनी शुरू की. सारी चीज़ें गई भाड़ में. ठीक है, सब कुछ चलता रहेगा, अपने आप को एक्सप्लोर, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते रहोगे, इधर उधर घूमते भी रहोगे, बट प्लीज़ काम करना ज़रूर शुरू कर दो और अपने पैसे सेव करना ज़रूर शुरू कर दो. तो कोई अगर कहीं स्टक भी फील कर रहा है ना, पॉज, टेक अ पॉज, Correct. go make some money, because we live in a very very expensive world, है ना. एंड जो भी शौक पूरे करने हैं वो पैसों से ही पूरे होते हैं. ठीक है, तो नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग टू यू, प्लीज गो गेट अ जॉब फॉर योरसेल्फ. ठीक है, एक तो उससे क्या होगा, एक डिसिप्लिन आएगा लाइफ में. यू विल वेक अप, यू विल गो समवेयर, यू विल मीट 5 न्यू पीपल. So, and when you make your own money, it brings a different kind of happiness. True. And with that money only you can explore other things in life. Correct. So So that's what एक I बात feel. actually जो आपने बोली that, so I'm assuming 2017 में you started your internship, मतलब maybe 21, 22 is when your friends must have graduated after PG. Uh, 4 to 5 years. So how has their trajectory? this is too personal actually, na. That's fine. Right. It's too personal. Like for example, I found the love of my life very early in life.
I got married also. Like I told you, my life with my partner is so intertwined. And we're actually growing together. And like he's quit medicine. I also see myself going in that direction. Touch wood, it's working in our favor. I can't say the same for everybody else, right? Some people are very Right. happy in their life. Right. Some are doing okay. Again, this is something very personal. I like this. You have to ask them only. मैं कैसे बताऊँ? मतलब मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि I am happy with the decisions that I made for myself. Did not choose the conventional, but मैं फिर भी आज भी यही बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको मेरी तरह बनना है. अगर आपको बहुत पसंद है मेडिसिन, आप करो. अगर आप मतलब अगर आप पीजी वगैरह में भी हो, चीज खराब भी हो रही है तो ठीक है, फिर वो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए खराब हो रही है. मेरे में तो जिगरा नहीं था इतना कि मैं इतना खुद सहन कर सकूं. I salute them, bro. Like for example, you're also doing residency, and I hope it's going well for you. It Yeah. takes a lot of vigor to do post graduation in India, and I have massive respect for everybody who's done post graduation in India. No, I think like you said, it's just such a personal thing. So much of it depends Such a on the personal thing. environment. Like, and Yeah. you said your level of, I guess, love for what you do, and then just how you are as a person, right? Like there are some people who thrive in an environment where there's like, Exactly. ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद वो करो, and then there are some मैं people वही who बोल just रही हूँ. can't do that. Yes, So I think and yeah, that is why I'm saying that I have massive respect for people who are doing this. I wouldn't. There is one thing that I would definitely want कि stop हो जाए, that these senior yeah, residents, you know frustrations juniors पे निकालते हो. This is bullshit. Professors harassing for taking chutki and all of that. This bullshit needs to stop. They need to treat like near residents like human beings. This is one thing that is uncalled for, and I hate that it happens in India. I don't know बाहर क्या होता है वो मुझे नहीं पता, पर यहाँ तो ये definitely होता है. that's a whole different conversation. But I think this was just a great conversation overall. And Shreya, thank you so much for joining us. We really appreciate your Thank you time. so This is just like an unreal story. We wish you all the very best and a lot of success going forward. But if you're ever playing in Yes, Bombay, do let us know. Like, Yes, Yeah. of course, I will do. My husband's playing Kind Music's after party, so I will tell you. Lovely. So any of our listeners, Let you know. yeah, if in Bombay you want to catch the after party, I please will, make sure. guys. Well, yes. Definitely. Thank you so much for having me here. Thank you for listening to my story. And I hope if Thank you for sharing anyone it. is listening to anyone who's feeling stuck in their life, I hope this little story of mine gives you a little inspiration कि सिर्फ पीजी करके ही आप खुश नहीं हो सकते, आप बहुत सारी और चीजें करके भी जिंदगी में बहुत खुश हो सकते हो. 100%. And I think that is a fantastic note to end this episode on. Thank you everyone for joining in. I'm Meg. And I'm Amey, and thank you for listening into this episode of From Scrubs to Startups. See you during the next one. Bye bye.